पता मुझे इसके ऊपर आपको फाइनली लेक्चर भी देना पड़े. ओके जी. We have discussed quaternary structure. हमने molecular machine का जिक्र किया. We learned that the quaternary structure is in fact the highest level of protein organization where multiple polypeptide units could join together through covalent and non-covalent interaction. And because they are joined as a non-covalent and covalent interaction, and these are multimeric protein complexes, this level of protein organization was referred to as quaternary structure because it has very little to do with the primary sequence, secondary interactions of within the polypeptide, and tertiary interactions within the folding of native form of the protein. Rather, it is a fully functional polypeptide chain that have joined together, and they are going to give the quaternary structure, जिसको हम अर्बई structure भी कहते हैं. And as a result of this, there might be some functional pockets, crevices, which could appear as a tool to manipulate protein function, जिसको हम active pockets भी कहते हैं. And because these active pockets are important for protein function, so by the binding of a ligand to these pockets, the overall structure of the protein could change. This phenomena is called allostery. It's in fact a regulatory phenomena in which a protein, when bind to its ligand, could change, might have changed slightly its structure and function. This kind of transition is called allosteric transition. That means a change in conformation and function of the protein by the binding of a ligand. And this allostery could be of two types. For example, it could be a positive allostery, and it could be a negative allostery. In referring to the fact that as a result of ligand binding, further ligands could bind. That means it could increase the affinity of the protein to further bind with the ligands, or it could decrease the affinity of the protein to bind to the ligand. So the examples are numerous. We are going to discuss in detail the hemoglobin protein and its oxygen affinity. We know that the hemoglobin is made up of four polypeptide chains, and these are called alpha and beta subunits, and each subunit is a fully folded three-dimensional structure. And when fully folded three-dimensional structure joined together, they give rise to a mature hemoglobin protein, as is shown here in this animation जो कि आपको नजर आ रहा है. और आपको चार रिंग्स भी नजर आ रही होंगी जो इस वक्त मेरे कर्सर के साथ साथ मौजूद है. These are porphyrin ring, heme binding molecule. ये चार के चार. So that means this is one subunit, and this is the second subunit, this is the third subunit, and this is the fourth subunit. So four subunits. So if there is a positive cooperativity, that means if one oxygen bind to one of these hemoglobin, in case of positive allostery change, further oxygen binding is enhanced with rest of three hemoglobin polypeptide chains. But if it is a negative allostery, then it means if one oxygen is bind, it will stop binding of further oxygen to the hemoglobin chain. This is called the modulator effect. This is called the effector. So the ligand could be named as effector molecule because they are triggering this change of structure, and because this structure is favoring further binding, it is called positive modulators, and because this structure is hindering the further binding, this is called the negative allosteric changes. So this is the hemoglobin. Just quick in the two or more slides, although कि YouTube के lecture के अंदर भी ये मौजूद है, but quickly मैं इसको remind करवाता चलूँ. Hemoglobin is a tetra molecule. That means four subunits are present, and each there are two alpha subunits which are made up of 141 amino acids and two beta subunits made up of 153 amino acids. So that is why normally hemoglobin, which is present in adult humans, in adult animals, these are called alpha 2 beta 2 hemoglobins. That means 2 alpha and 2 beta chain, and each of these alpha and beta chain contain a heme containing molecule which is called a porphyrin ring. हमने देखा porphyrin ring को myoglobin के केस में भी. So that means up to 4 oxygen could bind
to these hemoglobin molecules. So you could see these blue are alpha chains, the greens are beta chain. So alpha and beta, and 2 alpha and 2 beta can join together, they make a hemoglobin molecule, and each of these uh, subunit contain a porphyrin ring, heme containing molecule जिसके साथ oxygen bind कर सकती है. It's not the only type of hemoglobin which is present in the body. There are other types of hemoglobin. For example, other types of adult hemoglobins contain HbA2 hemoglobin, which is an adult hemoglobin. That means it is present in fully grown organism. And what is different? It contains an delta subchain instead of a beta subchain. So this is the alpha subchains are the same, but the delta subchain is replaced by so the beta subchain is replaced by the delta subchain. So this is called up to 2% of the adult hemoglobin is made up of this hemoglobin. So similarly, before birth, there are other types of hemoglobin. For example, there is a hemoglobin which contain epsilon subunit, and this epsilon subunit is present in hemoglobin, which is present in the early embryonic life in the fetus. And similarly, there is a hemoglobin which contains gamma chain. Of course, these are all in replacing the beta subunit, not the alpha subunits, but the beta subunit. So such type of hemoglobins will be called alpha 2 epsilon 2 hemoglobin, alpha 2 gamma 2 hemoglobin. And these hemoglobins, both hemoglobins which are present in the embryonic life, have a better affinity to bind with the oxygen. So that means the fetus in the mother's body has a better chance to get oxygen from maternal blood. So that is why this is so, because they do not have their lungs which is concentrated in oxygen. So अभी लंग्स पूरी तरह ग्रोन अप नहीं है, तो इसलिए दे हैव टू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम द मैटरनल बॉडी. एंड बिकॉज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैन वर्क ऑन अ हायर ऑक्सीजन प्रेशर, सो लो ऑक्सीजन प्रेशर के ऊपर ये इतना फंक्शनल नहीं है. सो दैट इज व्हाई देयर इज अनदर टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि हमने यहाँ पर देखी. ओके, if you could see the three dimension, if you want to see the three-dimensional structure, so the myoglobin and hemoglobin are the two molecules which carry oxygen in the body. The only difference, there are some few differences. Myoglobin is a single subunit protein, whereas the hemoglobin contain 4 subunits. Myoglobin contain also contain the heme containing molecule which is called porphyrin ring, and hemoglobin do also have the 4 porphyrin ring. The problem is that in myoglobin, normally the oxygen binds in an irreversible fashion. So that means if oxygen is bound to the myoglobin, it is mostly a very stable type of binding. So that means reversible stuff is not possible. So we know that we have seen in case of myoglobin that it's just single one unit, but there are 8 helices which is shown as alpha, beta, and in one of these helices, it gives rise to a crevice, is a pocket where this heme molecule is present, and this heme is bound to 9 different amino acids, जो कि आपको शायद यहाँ पर नजर आ रहे होंगे डिफरेंट अल्फाबेट्स की शक्ल में, थोड़े से डल कलर में, वरना बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो आपको ब्राइट कलर में नजर आ रहे हैं. सो दीज हीमोग्लोबिन्स आर इन फैक्ट hemoglobins are involved in binding with the heme molecule. All of these hemoglobins, all of these amino acids are normally non-polar amino acids. This is a very important thing which you need to understand. All of these amino acids are non-polar amino acids except 2 histidine, जो कि हमने पहले भी जिक्र किया, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है दोनों साइडों से. इन दोनों ने हीमोग्लोबिन को बाइंड किया हुआ. इनफैक्ट non-polar hemoglobins, non-polar amino acids जो कि इस myoglobin प्रोटीन के अंदर मौजूद है, they could bind non-covalently this heme and could affect the oxygen binding of this overall protein. We are not going to get much detail to this overall thing, but what I wanted to give you a message is that the oxygen which is bound to this myoglobin is a very stable, because the
proteins which the amino acid which are present in this pocket, they are non-polar, and because they are non-polar amino acid, so they have very little impact on the oxygen binding. So that means once the oxygen is bound to the pocket, it is very stable. So it will not release oxygen. The problem with the myoglobin is that it do not release oxygen quickly. So most of the time our muscles contain the myoglobin, most of the time whales contain myoglobin, or in other words, those muscles or those animals which जो कि low oxygen pressure के अंदर रहते हैं, they use myoglobin as a oxygen carrier because it's a stable oxygen. हमारे muscles के अंदर भी myoglobin मौजूद है, तो ये रिलीज उस वक्त करती है जब रियली स्टर्जेंट कंडीशंस हो जाए ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की, उसकी कंडीशन में हम कहते हैं कि सर्वाइवल की कंडीशन है, तब मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होती है. इन अदर वर्ड, it's a reservoir of oxygen. So when there is a deficiency of oxygen, you will use oxygen present with the myoglobin. Otherwise, this oxygen is no more available for anybody. Whereas the hemoglobin is a very good oxygen carrier. It do reversibly the oxygen binding capacity. Here in this picture, you could see the change, allosteric change, which is happening as a result of oxygen binding with the hemoglobin. So you could see the oxygenated and deoxygenated forms of the hemoglobin are quickly changing their shape. So I mean, of course, you could not see it very rightly, very precisely here, but if you could want to see my cursor here, आप जहाँ पर मैं इस वक्त ये मैंने बनाया, अगर आप इस पे फोकस करें, so you could see in oxygenated and deoxygenated form some loops are appearing and some loops are disappearing in other way. Same is the case maybe to if you could see somewhere here down, आपको यहाँ पर भी changes नजर आएंगी when oxygen bind करती है, जब नहीं bind करती, तो we are, so there are certain changes. How it is happening? It's just because the pocket where this heme group is present, they are mostly present. They are mostly are, for example, hydrophobic amino acid, as we have already discussed. But these hydrophobic amino acids, unlike myoglobin, could interact non-covalently, could make salt bridges to the heme group, to the heme of the this porphyrin link. That means very interesting thing. That means in myoglobin, when once the iron was bound, there was no further interaction. That is why this iron was quite stable. This oxygen was quite stably bound to the iron. But in hemoglobin, non-covalent interactions are present. That means these non-covalent interactions could somehow interfere the oxygen binding with this iron molecule. So this की वजह से iron molecule के अंदर ये possibility होती है कि वो अंदर सर्टन कंडीशंस अपने आप को रिलीज कर सके, क्योंकि देयर आर फर्दर. सो दूसरे लफ्जों में कहें कि क्योंकि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होगी अब इस इंटरेक्शन के अंदर, तो इंटरनल मैटर्स गो अवे हो गए. अब आप लोगों के लिए समझ आ गई कि जैसे बैरूनी मुदाखलत होगी किसी काम के अंदर, वो बैरूनी मुदाखलत बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट को ख़राब ही करते. तो इस वजह से ये सो न्यूमरस नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस जो कि मोस्टली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, दे could change the affinity of oxygen to this heme molecule, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है. By contrast, by name, when oxygen is bound to the when hemoglobin is non-oxygenated, that means when there is no oxygen bound to the hemoglobin, this state is called taut state. That means a tough state. When oxygen is bound to the hemoglobin, it is called a R state hemoglobin. इसको R state hemoglobin भी कह सकते हैं. यहाँ पर इस नीचे पैनल के अंदर दोनों स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं. A के अंदर आपको रिलैक्स्ड स्टेट नजर आ रही है. That means when it is bound to the oxygen, and the other B is without oxygen binding. So you could see small differences here, like this one. अगर आपको देखें तो यहाँ पर ये लूप स्ट्रक्चर थोड़ी सी मिसिंग है. If you could also focus maybe that सिमिलरली डाउन साइड पे आपको यहाँ पर लूप स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही होगी. सो इट्स जस्ट बिकॉज, एंड सिमिलरली हियर एट द डाउन साइड आपको कुछ स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स या टर्शियरी स्ट्रक्चर्स वहाँ पर डिफरेंट नजर आ रही है. इट्स जस्ट बिकॉज द ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ one amino acid has. So what happened when one oxygen is bound to one of the
one of the subunit, it exposes the other cavities, other oxygen binding cavities, oxygen binding molecules of the hemoglobin. So that means other further oxygen could be bound. So that means it's a positive cooperativity. One oxygen exposes the other places to bind oxygen. जिससे होता क्या है, इसका मतलब है कि hemoglobin is a very excellent oxygen carrier. It contains 4 oxygen at the same time. Not only 4 oxygen at the same time, one oxygen when bound, it makes a better position for the other heme molecules to bind with the oxygen. Fourthly, it could reversibly release the oxygen because non-covalent interactions in the pocket are present, जिनको हमने जिक्र किया. अगर आप इसको देख सकें तो अगर आप इसको देखें कि these are 2 अल्फा सब यूनिट्स जो कि आपको नीचे नजर आ रहे हैं और 2 बीटा सब यूनिट्स ऊपर नजर आ रहे हैं. व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीजन बाइंड करती है, जो नहीं बाइंड करती, दे कुड स्लाइड अप each other on 15 degree angle. So roughly a 15 degree के एंगल पे. So this is the deoxygenated. अगर आपको नजर आ रहा है fully aligned आपको नजर आ रहे हैं. But in case of oxygenated, आप देखें कि यहाँ पर ये 15 डिग्री के एंगल से रोटेट करना शुरू किया और यहाँ पर ये रोटेट किया और आपको इस जगह पर नजर आ रहा है कि वो दोनों साइड चेन्स, दोनों सब यूनिट्स अल्फा और बीटा सब यूनिट्स एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर गए और वो एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग दोनों के अंदर इजीली हो सकती है. ठीक है. सो this is called allosteric change, and this allosteric change is very important because it has changed the overall conformation of the protein. This is the ligand binding, and this ligand binding of the protein is important when you talk hemoglobin because so what happened in our lungs, where when there is a oxygen pressure is quite high, the deoxygenated hemoglobin carry 1 oxygen. The further 3 of the position are now more favorable to further bind to the oxygen, and then they carry the oxygen to the muscles where the oxygen pressure is low, and at this low oxygen pressure these non-covalent interaction जो कि पॉकेट के अंदर मौजूद हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की, वो इफेक्ट करती है. तो इसकी जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग है वो लूज हो जाती है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लूजनिंग दिस ऑक्सीजन इज रिलीज टू द मसल्स, to the body cells, brain cells जहाँ पर भी उनकी जरूरत थी. This is relaxed. Deoxygenated form of hemoglobin is called tau. Oxygenated form of the hemoglobin is called R state, and both are intermediate from each other. Because of this pattern of oxygen binding of hemoglobin and myoglobin, both have different oxygenation curve. If you draw an oxygenation curve, मैं आपके पास आऊँगा कल के लेक्चर में, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे. आज वो बताऊँ तो आपको नजर आएगा myoglobin has a hyperbolic oxygenated curve. This is the hyperbolic oxygenated curve, which shows that. So if you see the x-axis contain oxygen pressure, for example, the partial pressure of oxygen, it could be in the lungs or in another position, and आप इसको ऊपर की तरफ जाएंगे तो this is on the vertical axis, this is the capacity to carry oxygen. तो आपको नजर आएगा कि लो ऑक्सीजन प्रेशर के ऊपर myoglobin ने ऑक्सीजन कैरी की, बट आफ्टर दैट इट बिकम स्टेबल, और उसके बाद इसकी सैचुरेशन के बाद फर्दर चेंज नहीं होती. वेयरएज इसका मतलब एक सर्टेन प्रेशर चाहिए मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, और उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है. वेयरएज इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन इट्स अ सिग्मोइडल कर्व, इट्स नॉट अ हाइपरबोलिक कर्व, इट्स अ सिग्मोइडल एनी एस शेप वेव जो कि बनती है. तो आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन बढ़ रही है हीमोग्लोबिन के अंदर, एट अ सर्टेन ऑक्सीजन लेवल इट्स स्टेबल. अब इसका मतलब है कि आर्टीरियल ब्लड के अंदर इससे ज्यादा फर्दर ऑक्सीजन. मेरा अगर आपको देखें, अगर आप इसको ड्रॉ करें अपने बॉडी के साथ, तो आपको नजर आएगा कि वेन्स के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो रफली 30 mmHg होता है, जबकि आर्टीरियल के अंदर 100 mmHg होता है. तो आपको नजर आएगा कि मायोग्लोबिन तो इससे बहुत पहले सैचुरेट हो जाती है. मायोग्लोबिन
इसका मतलब है कि मायोग्लोबिन जो है वो वेन्स के अंदर भी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी नहीं रखती, वेयर एज द हीमोग्लोबिन कुड कैरी ऑक्सीजन वेरी गुड, बिकॉज वेन्स जितनी भी होगी उन सब के अंदर से जैसे ही वो गुजरेगी उनके अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई देती जाएगी एंड इट बिकम सैचुरेटेड इन द आर्टेरियल ब्लड लेवल जिसके अंदर वो मौजूद है. This ligand binding cooperativity could be explained in case of hemoglobin by equation which is called Hill-euqation. हम Hill-euqation की तरफ बाद में आते हैं, but first you need to understand how this is all happening. First you need to understand how ligand binding and protein binding could be explained in case of protein. हम इसको कैसे explain कर सकते हैं protein की case में. So you could go for this. For example, we know that this is a general type of equation where you see this is the protein, this is the ligand. So this is a ligand bound protein. So we have started with a ligand bound protein, and it's a reversible reaction. So you show it like this, and so that means if the reaction is reversible, this ligand bound protein could be dissociated into the protein fraction of the and into the ligand fraction. So that means protein and ligand join together and they make protein ligand complex, and this protein ligand complex dissociate itself and it make protein and ligand both together. You could explain dissociation constant for this reaction, which is called Kd for this reaction, and if you want to write this Kd dissociation constant, you write it like this, and you could see this is the concentration of unbound protein, concentration of unbound ligand, divided by concentration of protein ligand complex. This is now how we write this overall equation. If you rearrange this equation, so for getting so you could rearrange this equation, and you found that the denominator could be multiplied to the dissociation constant, and you could use this equation to further elaborate the overall situation. So the situation is, when you say this is a protein, what does that mean, the protein? At any moment, total protein contains some fractions which is bound to the ligand and some fraction which remained unbound. So when you take some concentration of protein, so that means concentration of protein has two different sections. One is bound with the ligand and one is unbound to the ligand. In other words, you could write it in this manner, जहाँ पर आपको लग रहा है कि this is the total protein, concentration of total protein is equal to unbound protein and protein bound with the ligand, जो कि आपको यहाँ पर. So this is our second equation. So now you could get this protein. So you get the quantity of unbound protein, and okay, so you see unbound protein, if you just rearrange, means total protein concentration minus protein bound with ligand. So if you remove the ligand bound protein from the total protein, you will get the protein which is unbound. So you could replace this unbound fraction with our equation, जिसको हमने rearrange करके equation 1 के साथ रखा है. So when you rearrange that fraction, so you will replace this protein, unbound protein section, with this new expression, which is the total protein concentration subtracted by the bound portion of the protein. If you will write it like this, so you will get this equation. So you see our left side is almost the same as in the beginning. So Kd times ligand bound protein concentration equal to if now you have changed this overall equation. अगर आप इसके पास आपके पास पेपर पेंसिल है तो you could multiply it like yourself. So आपको इसको जब रिप्लेस करेंगे तो आप इसको लिखेंगे बेसिकली. मैं अगर आपको यहाँ पर लिख के दिखा सकूं तो ये बन जाएगा, ओके, इसको P की जगह हमने ये लिख दिया है तो ये बन जाएगा T माइनस PL, ये कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट, मल्टीप्लाइड बाय
L. ठीक है, just to give you a better understanding of this overall thing. So that's mean now the concentration of ligand is multiplied by this and this separately. So when you multiply it, so you will get concentration of total protein times L ligand minus concentration of protein bound with ligand time L. ऐसे ही है ना? So you will get this. So I have made this for you here. आपको अगली स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा है. So this is the simple thing जो आपको when you put this value for protein, you got this equation, and you could rearrange this equation to simply make it more understandable. So you could, when you rearrange this equation, you get this expression. So this expression tells you that this expression gives you a much better understanding of the overall situation. So what you have done, you have just rearranged this equation, and further rearranging the equation is simplify this overall thing, and now you could get common things out of this equation. So now PL is common in both of these equations, so you got that out, and now you have a simpler equation which tells you and other thing, that means the ligand bound protein times dissociation constant plus ligand is equal to the other thing. Why we are doing that? We are getting a mathematical expression so that we could use this mathematical expression to draw our sigmoidal curve, और उसको हम ग्राफ के ऊपर बता सके कि किस किस्म के ऑक्सीजन प्रेशर के ऊपर हीमोग्लोबिन कैसे बिहेव करेगी. So when you rearrange this equation in order to get तो आपके पास ये चीज आएगी जिसके अंदर so this particular fraction जो इस वक्त आपके नजर आ रहा है, जिस ये आपको बता क्या रहा है, this is called this particular section of the equation tells that this is the fraction of the protein which is bound with the ligand divided by total. So out of total protein concentration, how much protein is bound with the ligand? This is a very important thing which जो कि हम expect करना चाह रहे थे, निकालना चाह रहे थे. So we started with a ligand bound protein, and we know that the how much of the portion of the protein is bound with the ligand and how much is remained unbound with the ligand. So you get that it is equal to the concentration of ligand divided by Kd plus concentration of the ligand, and this expression is called, that is the portion of the protein which is bound with the ligand is called it could be replaced with a new term which is called theta. So अब theta के साथ इसको replace कर सकते हैं. So you will get this equation which is in fact our basic equation जो कि हमें बता रही है कि हमने ऑक्सीजन का प्रेशर गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस प्रेशर्स के ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर कैसे मेजर करना है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैसे मेजर करनी है. सो फॉर अ गैसेस reaction involving O2, this equation could be written as follows. अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं equation को. Now we know what is the ligand. Ligand is oxygen, so you could replace the L with this oxygen, so it's a partial pressure of oxygen. In other words, if you don't want to say the concentration of ligand, so this is the partial pressure of oxygen. The Kd could be replaced by P50. P50 is a condition where 50% of the oxygen, 50% of the protein is oxygenated and 50% of the protein is non-oxygenated. So that is why it is called. And the similarly again the ligand could be replaced by this. So in case of hemoglobin, you could use this equation to get calculations to know
how much oxygen is going to be saturated at particular oxygen pressure and how much of the oxygen is not. So आप इसको यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जब आप वेंटिलेटर्स के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए होगा जिसके अंदर ये. So this equation in fact is responsible for this hyperbolic curve जो कि हमने पीछे भी देखा था. P52 represents partial pressure of a gas required to achieve 50% saturation, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है. So this is the equation जिसको हम यूज करते हैं. This is similar type of equation as you get for Michaelis-Menton's curve. Michaelis-Menton curve जो है it gives you protein kinetics, how protein and enzymes are working in biological world and in the lab. So you could see this is a similar type of Michaelis-Menten equation. This is the concentration of substrate. This is the Michaelis-Menten constant, and this is the concentration of the substrate, and this is the V naught divided by V max. अगर आपको याद हो थीटा को हमने रिप्लेस किया था, अगर मैं आपको प्रीवियस इक्वेशन दिखा दूं तो दिस इज द PL divided by total protein concentration. So this is the similar type of Michaelis-Menten equation जिसको हम use कर सकते हैं. So this gives you a sigmoidal curve for protein cooperativity. ठीक है. Sigmoidal kinetics was first explored. अच्छा, in case of oxygen there is a problem. Hemoglobin, there is a slight change which is called, this change was produced or proposed by Achbeil Hill in 1910. इस वजह से इसको हम हिल इक्वेशन भी कहते हैं. इसको हम हिल इक्वेशन को लिखने के लिए इस अपनी ओवरऑल जो हमने एक्सरसाइज की उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस इज द लिगेंड बाउंड प्रोटीन. हमने n के साथ बता दिया कि हाउ मच. सो वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर दैट द प्रीवियस इक्वेशन जो हमने डिराइव की वो एक ऐसी प्रोटीन के लिए थी जिसके अंदर सिर्फ एक लिगेंड बाइंडिंग कैपेसिटी हो. But if a protein has multiple ligand binding capacity, you need to change it further. So this change has brought about both this Hill, and this N represents the number of active sites which are present in the protein. So hemoglobin contains 4 active sites, so you could write it for N number of protein. So you could see the equation will be now like this. So ligand bound protein equal will give you protein plus ligand molecules times number of active sites. जितनी active sites होगी उतने times आपके पास ligand molecule मौजूद होंगे. ठीक है, ये आपके पास इस इक्वेशन से नजर आता है. This equation, this form of the equation is called the Hill equation. You could replace ligand with the PO2 as we have discussed in our previous slide जहां पर आपने इसको replace किया. So you could write it the equation now like this. So you could write theta. So only change has brought about by this number of active sites जिसको हमने n से represent किया और वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है. So this is the n number of sites जो कि आपको नजर आ रही है. And you could see that the equation, the new form of the equation will be written as PO2 raised power n. N represents the number of active sites जो कि इस प्रोटीन के अंदर मौजूद है, and P50 plus you of course. And this n is called in fact the Hill coefficient. हम इसको Hill coefficient कहते हैं. मैं इसको अगर मोनोमेरिक फॉर्म है प्रोटीन की तो उसमें n की जगह 1 आ जाएगा. अगर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ दी है तो उसकी जगह n आएगा. फॉर हीमोग्लोबिन n की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वो 2.8 है. हम इसकी तरफ अभी आएंगे तो क्यों है. सो एन इंफॉर्मेशन P50 या द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के लिए 4 किलो पास्कल है. ठीक है. सो दैट मीन्स हीमोग्लोबिन हैज लोअर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन का P50 प्रेशर 0.26 है. इसका मतलब है कि बहुत थोड़े ऑक्सीजन प्रेशर के ऊपर भी मायोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगी. इसका 50% ऑफ द मायोग्लोबिन विल बी सैचुरेटेड एट 0.25 किलो पास्कल, whereas for the whole of the protein hemoglobin to get to reach to the P50 pressure it requires 4 kilopascal, which is simply different
देन जो कि हमने देखा ग्राफ में भी देखा था, तो ये तो वीनस प्रेशर से भी पहले आ जाता है, वेयर एज दिस 4 किलो पास्कल इज क्वाइट हाई नंबर। दिस इज दी कर्व जो कि आपको नजर आता है। इस कर्व की डिटेल्स में आपको कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इट्स मैंने बेसिकली, अगर इफ आई कुड शो इट टू यू, मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करता हूं जहां पर मैंने आप लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रेशर कैलकुलेट करके रखा हुआ सिग्माइडल कर्व। अगर आपके लिए एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ किसी वक्त। ओके, दिस वन इज here. I'm not going to explain this curve here. I have used this Hill equation to calculate the oxygen pressure. So you could see here, आपको अगर आपको इस वक्त नजर आ रही है एक्सेल शीट, तो आप इसको देख सकते हैं। आप देखें Hill equation लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको फार्मूला भी जो आपको अभी हमने डिराइव किया PO2, वो फार्मूला भी आपको नजर आ रहा है, और हमने n की जगह 2.8 लिख दिया। ठीक है, तो यो आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट कॉलम के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर दिया गया है कि इस ऑक्सीजन प्रेशर के ऊपर क्या सिचुएशन होगी। सेकंड कार्बन के अंदर किलो पास्कल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर मेजर करके दिया गया है। मरकरी के अंदर, एंड उसके बाद सैचुरेशन लेवल कितना है उसके साथ, और फिर हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की किस कदर होगी, और इन सब वैल्यूज को यूज करते हुए जो कर्व बना वो इस किस्म का बना। आई वुड गिव यू द फुल डिटेल इन टुमारोज लेक्चर, तो आपको नजर आएगा कि बेसिकली ये सिग्मॉइडल कर्व आपको जो नजर आ रहा है वो ये आपको एस शेप कर्व क्यों बन रहा है। दिस इज द एस शेप कर्व जो कि आपको नजर आ रहा है हीमोग्लोबिन। Hg stands for hemoglobin, Mg stands for myoglobin. So myoglobin का कांस्टेंट प्रेशर 0.27 के ऊपर, हीमोग्लोबिन के लिए प्रेशर 4 किलो पास्कल के ऊपर। मायोग्लोबिन की सैचुरेशन कैलकुलेट की हमने इसी फार्मूले से, हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कैलकुलेट की हमने इसी फार्मूले से। इफ आई कुड शो यू द फार्मूला, सो यू आपको फार्मूला भी ऊपर नजर आ रहा होगा, तो इससे आपको पता चलेगा। और अगर आप इन दोनों को यूज करेंगे इस कर्व को बनाने के, आप ये देखें इस वक्त हीमोग्लोबिन का कर्व आपको नजर आ रहा होगा जो कि सिग्मॉइडल कर्व है, एंड दिस वन इज मायोग्लोबिन। ठीक है, आई होप इस लेक्चर में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी उसकी डिराइव करने के लिए हुई होगी, लेकिन बट इट इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग जो अगर आपको समझ आ जाए। हम मैकेलिस मेंटन इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। आई वुड स्टॉप इट हेयर क्योंकि मेरे पास आज के लिए इतना ही टाइम था। आप लोगों को इसके मतलब कुछ पूछना तो वी हैव 10 मिनट्स जिनके अंदर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जी क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि काइंडली गो टू दी लिटरेचर जो मैंने आप लोगों को भेजी है, बुक मैकेन की, और उसका 5th चैप्टर है कि 4th चैप्टर जिसके अंदर ये डिटेल ज़्यादा दी हुई, आप उसको पढ़िए। और कल इसको ज़रा प्रिपेयर करके आइए, हम इसको ज़रा फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको मजीद जो चीज़ें समझने समझाने, ईद के बाद वैसे भी ज़रा थोड़ा सा बंदा सो रहा होता है, तो ज़रा तवज्जो कम होती है। और स्टूडेंट्स आज वैसे भी 4 हैं, बाकी स्टूडेंट्स ही मौजूद नहीं है। क्या चक्कर है सर? वो नोटिफिकेशन ही नहीं आई थी। अच्छा, कल की जो क्लास है वो किस वक्त होगी वो अभी बता दें। आई वुड सजेस्ट कि आप कल की क्लास 3-3:30 बजे के टाइम पे लें। इज इट पॉसिबल? यस सर, फॉर मी पॉसिबल। सर कल 4 बजे मेरी क्लास है, तो 3-3:30 करेंगे तो मैं उस क्लास में अटेंड नहीं कर सकूंगी। कौन सी क्लास है आपकी? सर न्यूक्लिक एसिड की क्लास है मेरी। उसके अलावा कोई क्लास नहीं, उससे पहले मेरा सारा स्लॉट फ्री है, उससे पहले कोई क्लास नहीं है मेरी। अच्छा, मैंने ये टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है, मुझे इस वक्त निकलना होता है, वो लंच का टाइम होता है, दूसरा फिर ज़रा नमाज वगैरह के लिए, तो वो बड़ा ना एक ऑकवर्ड टाइमिंग हो जाती है। मैं भी ज़रा जल्दी में होता हूँ, तो आप लोगों के साथ प्रॉपरली वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर हम आपके अलावा भी किसी का इशू है कल? पता नहीं सर। मेक